I think the screen is visible to you. Yes, sir, it's visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm talking about this question. For the mechanisms shown in figure 2.51, we have to determine the velocities of the point C, E, and F, and the angular velocities of the link BC, CD, E, and EF. Do you think there is a need for me to explain, or should I just draw it? Just draw it. ओके मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो वर्ड डॉक्यूमेंट में ले जाऊं, क्या करूं? वर्ड में फिर मेरे पास फिगर गायब हो जाएगी. एक मिनट, लेट मी टेक द प्रिंट स्क्रीन. वर्ड पे आने दो. Okay. So first of all, let us try to count the number of links in the system. How many links are there? So there are 5 links. There are 5 links. 7. 7. 7, sir. कैसे बेटा कैसे? 5 होगा सर. The देखो 6. ये पूरा एक ही लिंक है. This is a ternary link.
6. BCE is a single link. अगर ये लिंक इसको मैं 2 नंबर लिखता हूँ. All fixed links are 1. All fixed links are 1. This is 1. 5, sir. Okay. This is 2. This is 3. This is 4. This is 5. And this is 6. 6 हुआ कि नहीं? Okay, sir. Yes, sir. जितने fixed link हैं, they are link number 1. I am treating this 2, 3, 4. This is 5 and this is 6. Therefore, 6 into 6 minus 1 by 2, that is 30 by 2, that is equal to, it will have 15 instantaneous centers of rotation. Right now, instantaneous center की बात नहीं करेंगे. So, A, D are the fixed links. The extreme ends of a fixed link, और इसका कोई नाम नहीं दिया, let it be G, ताकि आपको convenient रहे. So this will, it is moving in anti-clockwise direction, therefore A, comma D, comma G. These are the fixed links. Okay. This is rotating in anti-clockwise direction at 100 RPM. You can find out omega BA, that would be 2 pi n upon 60, some radians per second. Then select a suitable scale for drawing the vector diagram. The direction of VBA will be perpendicular to BA through A, something like this. ये पॉइंट मान लो, ठीक है, क्योंकि मैं लाइन दोबारा नहीं बना पाऊंगा. So let this be the point B. Now consider C. C is on CD, C is on BC. In the first go, I will consider C on CB. When I consider C on CB, it means C is rotating with B as a center of rotation. If I'm interested in finding out the velocity of C with respect to B, I need omega of BC into BC. This is not known to me. This is known. It means I don't know the magnitude, but I know the direction. So I'll use the direction. When C is rotating with respect to B as a center, the direction of velocity of C will be perpendicular to CB through each and every point on CB right up to the point B. Okay, right up to the point B. Yes, sir. Okay, therefore, perpendicular to CB through B, vector of infinite length. Okay, why? Because I don't know the magnitude. Now I've already told you C is also a point on CD. When C is on CD, when you are considering C on CD, D becomes the center of rotation. D is already in the velocity image. Then you need to find out the velocity of C with respect to D. It will be omega CD into CD. The thing is, this is missing. It means you don't know the magnitude, you know the direction. What will be the direction? The direction perpendicular to CD. So perpendicular to CD. लेकिन बेटा वो तो फिर मैंने जिस हिसाब से बनाया उस हिसाब से तो कटेगा ही नहीं कहीं. अगर ऊपर को बनाएंगे सर, यहाँ से ADG से ऊपर की तरफ बनाएंगे तो सर कट हो जाएगा शायद. ऊपर की तरफ, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. आपकी बात सही है. ऊपर को लाइन एक्सटेंड कर देंगे ना बीच से. हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट बेटा, जस्ट गिव मी. अभी इसके परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से आएगा. ओके. Yes. The intersection will define the position of point C. Okay. So this is giving me velocity of B with respect to A, and this is giving me velocity. This is the point B, and this is the C. Therefore, this vector will give me velocity of C with respect to B, and this vector will give me the velocity of point C with respect to D. D, sir.
Now come to the point E. Come to the point E. E can be considered in the first go as a point on EC. When E is considered on EC, I need velocity of C with respect to E. That will be omega CE multiplied by CE. Since this is not known, I don't know the magnitude, but I know the direction. I will be using the direct concept of direction. So when E is on EC, C will be the center of rotation. Its direction of velocity will be perpendicular to EC through C. Something like this. देखो बाहर वाली चीज आएगी, तो ये बाहर वाली आएगी नहीं, यहाँ ड्रॉ करूंगा छोड़ते ही घट जाएगी. लेकिन आई होप you will gather the concept. Yes, When E is on E, yes, sir. velocity of E with respect to D will be omega ED into DE. I don't know this, therefore I don't know the magnitude, but I know the direction. The direction will be perpendicular to ED through D. Where is D? Yeah, it means something like this. Yes, sir. Yes, this sir. intersection will be the point E. Now let's try to find out whether I have located the point E. अब ये एक ही लिंक है, टर्नरी लिंक है, इसलिए इसको इस तरह से आपने दिखा दिया जैसे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में दिखाया हुआ है. Now in the configuration diagram, I start reading from D, I will move to C and E. So what is the direction? DCE, DCE. Clockwise. Clockwise, तो sir. वही चीज यहाँ भी होना चाहिए, DCE. You are moving in the clockwise direction. Yes, sir. It means you have located, you have located it correctly. Okay. This is the E point. So this will give you the velocity of E with respect to C, and this will give you the velocity of point E with respect to D, or the absolute velocity. Once you have located the point E, then the next step is to locate the point F. Consider the point F on the link EF. ये जो सर्कल बना है इसका मतलब समझते हो ना क्या है? ये जॉइंट बताया, जॉइंट बताया हुआ है, and it is a pin joint. It's a pin joint means symmetrical pin है, and it's always a lower pair. It's always a lower pair. Now when F is on FE, E will be the center of rotation, therefore the direction of velocity vector will be perpendicular to this through EF. कुछ इस तरीके से होगा, इस तरह से होगा. Okay, when F is on the slider, it will have only straight line motion through the fixed guideways. Yes, sir. इस तरह से कुछ बन के आएगा. अब let me show you the Sir, your screen is not. Your screen not visible. हाँ, अभी मैंने स्क्रीन शेयर करना बंद किया है, मैं दूसरा दिखाना चाहता हूँ आपको. Wait for a moment. Okay, sir. Not this one.
मेरे ख्याल से ये वाला है। Yes, sir. That's a velocity diagram. ये ना, ये वाली, ये वेलोसिटी डायग्राम है। Yes. ओके, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज सही था। मेरा वेक्टर का लेंथ तो चूंकि अप्रोक्सीमेशन पे बना रहा हूँ इसलिए एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, इसलिए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना। मेरा भी पॉइंट इसी साइड में कहीं आ रहा था, एफ इधर ही आ रहा था। Yes, sir. It's same. Yes, sir. ओके, सो अब आपसे कुछ भी पूछा हो, आपसे क्या क्या पूछा था, जो व्हाट आई रिमेम्बर आपसे पूछा था, एंगुलर वेलोसिटी किस चीज का भी पूछा था। फॉर दैट पर्पस व्हाट यू हैव टू डू, अगर मान लो आपसे पूछा था व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्नरी लिंक, ओके, आपको ये चीज पता है, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू d पता है, इट इज ओमेगा cd into cd, therefore omega cd will be velocity of c with respect to d divided by cd. Velocity of c with respect to d दे रखा है, it is 0.83 divided by length in meters. ये हमेशा मीटर में रखना क्योंकि यहाँ मीटर में आंसर दिया हुआ है। You will get the angular velocity of the ternary link, और ternary link है तो पूरी लिंक की एंगुलर वेलोसिटी एक ही होगी। ओके, Yes, sir. now let's discuss this one. That is the problem number 15. 2.52 yeah. For the four link mechanism, यहाँ इसने बताई दिया चार लिंक है। In figure 2.25, find the linear velocities of slider C and D and the angular velocities of link AC and BD. So first link is this. This is also first. This is also first. This is second. This is the third. First, second, third, fourth. Six link है बेटा ये। अगर यही है 2.52 तो it's not a four link, it's a six link, है ना? Yes, sir. It's a six link mechanism. Now, I'll try to draw it over here only. The fixed point. Answer O, C, and D. OCD. O डी पे तो फिर इसको कोई, इस पॉइंट को कोई नाम देना पड़ेगा फिर, ठीक है? OCD, O, C, D, रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैं बनाता जा रहा हूँ, आपको जहां परेशानी आएगी वहां आप मेरे से पूछेंगे। Okay, right, sir. This is A and this will give you velocity of A with respect to O. Okay? अब कैसे पॉइंट लोकेट करूं? Can I locate the point B right now? No, I can't locate because it is the simply, मतलब ये आपके पास इस तरह से एक लिंक है जिसके बीच में आपने स्लॉट कर दिया है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्या बताया है कि when you are trying to locate any point on the velocity image or the velocity diagram, your emphasis should be to locate the extreme ends, huh? Therefore, what I will do, देखो B को locate करने के लिए I need two things. I need A, okay? A is there, but I need this point also. But this point is missing. Or I need this point. This point is also missing.
Therefore, I can't locate B at the very first go. Therefore, I will try to locate the extreme end. अगर इसे आप X कह दो, okay? So when X is on AX, then its direction of velocity will be perpendicular, something like this. Okay. Now, when X is on this slider, then its motion will be parallel to the line of stroke through the fixed point. This is the fixed point. इसके parallel इस तरह से हो जाएगी. Okay. It means this is the point X. अब B point कहाँ है? B point is some distance from A. तो आप सीधे से लिखो, आप लिखो AB by AX. कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए कैपिटल AB by AX, वेलोसिटी डायग्राम के लिए स्मॉल में, जो चीज यहां लिखा है AB by AX. Therefore, AX will be equivalent to AB by AX into AB. AB आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो? Yes, sir. कर सकते हो ना? तो आपको जो ये आएगा वो A से डिस्टेंस आएगा. सॉरी, नहीं, मुझे क्या निकालना था? AB निकालना था. सॉरी, मुझे AB निकालना था. So I will write Yes, sir. AB by AX is equivalent to AB by AX. Therefore, AB is equivalent to AB by AX into AX. ठीक है? AX का डिस्टेंस आपको यहाँ पता ही है. तो जो AB आएगा, that will be the distance of point B from A. तो यहाँ कहीं पे आ गया. This will become the point B. Okay? अब जब B लोकेट कर लिया है, फिर ये लोकेट करना आसान हो गया. Consider B on BD. Then for B, this is the center of rotation. Direction of velocity will be perpendicular to this line through D or through B. Something like this. When D is on the fixed one, then. Excuse me, sir. ये आ गया. हाँ जी, बोलिए. Sir, here the D point is fixed, so can't we take the another point here? Let it be Y. Let it be Y. आपका let it be Y. Okay. ठीक है. The velocity is perpendicular to BY. हाँ, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा. Yes, sir. Is it okay? Yes, fine, sir. अब कोई भी मैकेनिज्म देख लो इसमें, जो अगर आपकी स्क्रीन पे देयर आर 3 मैकेनिज्म व्हिच आर अवेलेबल टू यू. किसी में आपको लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, अपार्ट फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड टुडे ओनली आफ्टर अपग्रेडेशन ऑफ ब्रांच. आई नो दे माइट बी फेसिंग सम डिफिकल्टी. उनको वो मेरे से बाद में टाइम लेकर के कभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे. बट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास, कोई डिफिकल्टी है किसी में भी? No, कॉन्सेप्ट sir. यही है, और कोई नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें. Sir, no difficulty. But we're trying to do it. The thing is, only it demands practice. It demands practice from you. जितना प्रैक्टिस करोगे, मैं नहीं कहता हूँ डॉक्टर लेके प्रैक्टिस करो. जस्ट विद द हेल्प ऑफ पेपर पेन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू कैन डू इट. ओके? Yes, sir. Right. अब आपके पास 2 चॉइस है. वेदर आई शुड टीच यू, मतलब चॉइस ये है कि प्रेफरेंस में, और कुछ नहीं. एक है आई सेंटर मेथड, और शुड आई गो टू एक्सेलरेशन एनालिसिस? Sir, I-centric method. I-centric method. Yes, sir.
Okay. ये क्या हो गया भाई? आई सेंटर से इसने सॉल्व किए हैं. Okay, now with the help of this particular figure, I'm going to explain you the eye center. Okay, as you can just see on the screen, there is a plane body P. There is a plane body P having a non-linear kind of motion with respect to the body Q. This is the body Q. Non-linear means जैसे आप सर्दी लगती है तो अपने हथेली एक दूसरे के ऊपर रख के रगड़ते हो, उस तरह का मोशन है. Okay. At any instant, the linear velocities of the 2 points A and B on the body of P is found to be that this is the velocity, this is the direction of the point A on the body P, and this is the direction of the point B on the body P. Okay. Now, if you draw a line perpendicular from the velocity vector of point A, it means the center of rotation will be on this dotted line. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, similarly, when you draw a line perpendicular to the velocity vector B, like this, it means the center of rotation for the point B will be on this particular line. That should be I. Yes, sir. But when you think about the when you think from the point of the body, both the points, whether it's A or it's B, it is located on the point P. Yes, sir. And the fact is that a body at a particular instant cannot have two different values of angular velocities. Yes. The point A and the point B can have different values of linear velocities, but the body in general, that is the body P, it can't have at any instant two different values of angular velocity. Is it okay? देखो, क्योंकि किसी भी point की जो velocity है, it is r into omega. The velocity of the center or the distance of the point from the center of rotation can be different, but the angular velocity of a body at any instant is going to have only single value. ये तो बात सही है ना? Yes, sir. So Yes, sir. what I can say that the point A at this instant is rotating with respect to some point as a center which is perpendicular to this vector, and similarly point B at this particular time is rotating about some point which is nothing but the center of rotation for the point B, and this is located on this particular line. Okay, if you keep on extending this particular line for the points A and B, what you will find, they are intersecting at this particular point. Okay, and this point will be the instantaneous center of rotation for both the points A as well as the point B.
इट्स नॉट नेसेसरी, यहाँ पे दिखाया हुआ है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर दैट इंस्टेंट ओनली. ओके, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस यूज किया जा रहा है. Clear? Now in this particular diagram it has been shown that it's not necessary that the instantaneous center of rotation of both the points A and B will lie on the body P. It can lie on the body Q also. Okay, and somehow if you are giving a non-linear kind of motion in such a way that point A is moving in a straight line, point B is also moving in a straight line, and this line shows that the center of rotation for point A is on this line and the center of rotation for point B is on this particular line. And if they are not intersecting with each other, it means they are having a straight line motion. And at that case, the instantaneous center will always lie at infinity. Clear? Okay, sir. Sir, can you explain once again? Sorry, Sir, yes, sir. I don't get it. क्या चीज नहीं समझ में आया, बताओ. देखो, अब आप नॉन लीनियर काइंड ऑफ मोशन दे रहे थे ना, तो आप अपने आप को प्रोग्राम तो करते नहीं हो. कई बार हम हथेली रगड़ते हैं तो सीधे डायरेक्शन में भी रगड़ते हैं, ठीक है? तो वो इसमें हो रहा है. सपोज फ्रॉम योर साइड यू हैव गिवन इट अ नॉन लीनियर काइंड ऑफ मोशन, लेकिन आपने देखा कि पॉइंट ए जो है आपकी हथेली पे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में. उसी तरह आपने दूसरा पॉइंट भी आइडेंटिफाई किया, इट इज ऑल्सो मूविंग इन द स्ट्रेट अलोंग द स्ट्रेट लाइन. तो मैं क्या कहूंगा, जैसे पॉइंट ए इज रोटेटिंग, जब ये परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दूंगा तो मैं कहूंगा द पॉइंट ए इज रोटेटिंग अबाउट सम सेंटर which is the center of rotation and it is located on this line. उसी तरह for B I will say that point B at this time is rotating about some center of rotation which is located on this particular line. इस केस में क्या था, दोनों को जब मैंने लाइन को एक्सटेंड किया, they are intersecting at a particular point और मैंने कह दिया the I center is this on the body P. इस केस में क्या हुआ, it's not necessary that the I center will always lie on the body P. It can lie on the body Q also. Okay, but if both the points A and B, they are moving parallel to each other, they are having a straight line kind of motion, then at that case, the straight line motion मतलब क्या है? Anything which is moving on a straight line is nothing, but it's also rotating with the difference that its center of rotation is located at infinity. तो ये चीज ये बता रहा है ये. Sir. Okay, sir, got it. Got it? Yes, sir. Sir. हाँ जी, सर बोलिए. बॉडी के बाहर भी तो आई सेंटर हो सकता है, मतलब. हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है. ओके ओके हो सकता है. ठीक है. अब मैंने क्या किया, यहां तक तो मैंने सिर्फ 2 बॉडी लिया था, ठीक है? नाउ आई एम मूविंग विथ 3 बॉडीज. अब नंबर ऑफ आई सेंटर्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है n into n-1, where capital N stands for the number of eye center and small n stands for the number of bodies or the link. It is equivalent to n into n-1 divided by 2. इसीलिए मैं हमेशा आपसे number of links count करवाता रहता हूँ. Okay, so if there are 3 bodies which are, अगर 2 bodies हैं तो कितने eye center होंगे? 2 into 2-1 divided by 2. 1. अगर यही बॉडीज स्मॉल एन अगर मैं 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आई सेंटर्स n विल बी 3 into 2/2, दैट इज इक्वल टू 3. 6 कर दूं, इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6, देन इन दैट केस द नंबर ऑफ आई सेंटर्स विल बी 6 into 5/2, दैट इज 30/2, which in turn is equal to 15. ओके, तो अभी मैं आपके पास 3 बॉडीज के साथ आ रहा हूं. Now there are 3 bodies. एक आपका बॉडी R है, एक आपने बॉडी इस पे P ले लिया, एक बॉडी आपने Q ले लिया, ठीक है? तो नंबर ऑफ आई सेंटर्स कितने होने चाहिए? दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R. हाउ मेनी बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर? 3. 3, sir. तो मेरे पास नंबर ऑफ आई सेंटर्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए. Yes, 3. 3 into 2/2 is equal to 3. 3 आई सेंटर्स होने चाहिए, ठीक है?
अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, P is in direct contact at this location, it is direct contact with the body R, Q is in direct contact. ओके तो मैंने 3 आई सेंटर्स ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। यहाँ पे P और Q एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये जो मैंने आई सेंटर लिया, मैं इसको कहूंगा दिस इज PR, इसको मैं कहूंगा Q और R के बीच में बन रहा है QR, आई सेंटर QR, और ये P और Q के बीच में बन रहा है, therefore I will designate this center as PQ। अगर 1 2 होता तो 1 2 लिखता, अगर मान लो ये मेंबर 1 है, दिस इज 2 दिस इज 3, तो मैं इसे लिखता आई सेंटर 1 2, इसे मैं लिखता आई सेंटर 1 3, ओके एंड सो ऑन। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, चाहे न्यूमेरिकल हो या अल्फाबेट हो, उसके असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे एक फिजिकल कॉन्टेक्ट बन रहा है, कई जगह बन रहा है, मैंने मान लिया यहाँ पे बन रहा है, तो मैंने इसको एक आई सेंटर इसे कह दिया, दूसरा आई सेंटर ये, और जहां P एंड Q एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं उसको मैंने ये मान लिया, ओके क्लियर। यस सर। अब मैंने क्या देखा कि जो ये आपका PQ पॉइंट है, दिस इज द PQ पॉइंट, मैं जब P एंड R के इधर से देख रहा हूं तो व्हाट आई फाइंड दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, ओके। अगर मान लो यहां था और वेलोसिटी ऑफ Q की डायरेक्शन आपको ये दिख रही है जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा, the point P at this instant, if it is moving in this particular direction, it means it is rotating about some line which is perpendicular to this. Similarly, जब मैं Q के लिए देख रहा हूं तो Q जो है, Q is on the body Q, हाँ, the point Q is moving in this particular direction. तो इसका मतलब क्या है, it is rotating on this line which is perpendicular to the direction of velocity PQ. ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैंने क्या किया था देखो, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो 3 हेलो, यस सर। यस सर। तो मुझे मालूम था कि 3 bodies when they are in rigid motion, they are in relative motion with respect to each other, तो मेरे पास 3 आई सेंटर होंगे। अब मैंने क्या किया, बॉडी R को मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है, बॉडी R स्टेशनरी कर दिया। आप समझ रहे हो ना, जैसे टेबल पे आपका जो सामने टेबल या डेस्क है, आपका एक पाम जो है इट इज P, द अनदर पाम इज Q, Q को P के ऊपर रखो और दोनों को टेबल पे रख के नॉन लीनियर काइंड ऑफ मोशन दो, ठीक है। यस सर। तो एक पाम जहां आपका फिक्स बॉडी R के साथ है या डेस्क के साथ है, दैट इज PR। जो दूसरा पाम जिसको आपने Q डेजिग्नेट किया जहां R के साथ कांटेक्ट में है, दैट इज QR। और जहां आपके दोनों पाम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, वहां पे आपने एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया P और Q का, है। अब मैंने ये 3 आई सेंटर्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब मैं पॉइंट P को इस पे देखता हूं तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, और Q को जब देखता हूं तो Q की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है। So do you think that a particular point at any instant can have 2 different direction of velocities? No, sir. नो नहीं हो सर। सकता नो ना? सर। नेवर। किसी भी कीमत पे इट्स नॉट पॉसिबल कि एक पॉइंट कि मेरे देखने से ये इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, जब मैं इधर से देख रहा हूं और इधर से देख रहा हूं इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट्स नेवर पॉसिबल। उसमें से पॉइंट के चीथड़े उड़ जाएंगे और हमारा जितना कॉन्सेप्ट वो सारा गंगा जी में बह जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। इट मींस आई हैव डन अ सिली मिस्टेक और अ सिंपल मिस्टेक कि मैंने पॉइंट जो थर्ड आई सेंटर था उसको मैंने यहां पे मान लिया। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड आई सेंटर को यहां ना मान करके अगर यहां मान लूं, ठीक है, यहां पे मान लूं, अब मैं
ये मान लो ये वेलोसिटी ऑफ क्यू की भी ये डायरेक्शन हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पी की भी ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब वेदर यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि Q is rotating with QR as a center of rotation, P is rotating with PR as a center of rotation. और जब दोनों तरफ से देख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मुझे एक ही दिख रही है। क्लियर? Yes, sir. So Can it you means please when three explain? bodies, I'm not able to understand. क्या चीज नहीं समझ में आएगी? So this मैंने देखो बेटा मुझे सिर्फ we ये मालूम है, जस्ट लिसन टू मी, at मुझे another ये मालूम था 3 आई सेंटर्स होंगे, 3 बॉडीज हैं, तो ठीक है। अब मैंने क्या किया, आर्बिट्रेटली एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने इस पे ज्वाइन किया हुआ दिखाया हुआ है, कोई बात नहीं। मैंने जब ये लिया तो जब ये आई सेंटर, तीसरा आई सेंटर ये ले लिया, जब मैं इस आई सेंटर की डायरेक्शन देख रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, मुझे ये डायरेक्शन दिख रही है। जब मैं इस पॉइंट की मूवमेंट देख रहा हूँ, इट इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस, इट मींस अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है तो इसका आई सेंटर यहाँ पे है। जब इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है तो इसका आई सेंटर यहाँ पे है, और ये खुद अपने आप में एक आई सेंटर है इस समय। ओके, तो इसका क्या मतलब है, एक पॉइंट एक एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इट कैन नॉट हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि मैंने थर्ड आई सेंटर लोकेट करने में ही कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक, एंड व्हाट इज द मिस्टेक? द मिस्टेक इज दैट, और इस मिस्टेक तो मैं आपको बता दिया, उसको सुधार कैसे सकता हूं। अगर मैं ये थर्ड आई सेंटर को इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द थर्ड आई सेंटर एट दिस लोकेशन, अगर मैं ये कहता दिस इज दी, यहां पे भी तो पी और क्यू कॉन्टेक्ट में है, दिस इज दी थर्ड आई सेंटर। ओके, अब एक आपने वेक्टर बनाया, इधर से देख रहे हो, यू आर सेइंग दिस इज द वेलोसिटी ऑफ क्यू, इधर से देख रहे हो आप कह रहे हो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, दोनों की डायरेक्शन एक ही है। दैट इज Yes, sir. पॉसिबल, और यही होना भी चाहिए। पॉइंट एक ही है, पॉइंट एक ही आपका नजरिया है। आप यहां से खड़े होकर के बायस्ड होकर कह रहे हो ये पॉइंट, ये बॉडी पी पे है, यहां से देख रहे हो आप कह रहे हो ये बॉडी क्यू पे है, लेकिन है तो एक ही, है तो एक ही ना। Yes, sir. Yes. तो इसका मतलब क्या, अब अगर मैं थर्ड आई सेंटर को यहाँ पे मान लूं, तो चाहे मैं पी से बायस्ड होकर देखूं या क्यू से बायस्ड होकर के देखूं, डायरेक्शन एक ही रहेगी। ठीक है, तो वो यही कह रहा है, if three plane bodies have relative motion among themselves, their eye center must lie on a straight line, and this is known as Kennedy's theorem. यानी कि तीन बॉडी जब भी रिलेटिव मोशन में होंगे, there will be three eye centers, and all the three eye centers should always fall in a straight line. There is no other way. Okay, so Clear? this is the particular condition for three eye centers. Pardon? The particular condition for three eye centers. Yeah. और थ्री आई सेंटर्स देखो, अब आप धीरे धीरे जब मैं आई सेंटर मेथड से कराऊंगा ना, तो वहां पे आप जब भी मोशन देखोगे किसी एक लिंक का, तो आपको लगे, आप जब उसका आई सेंटर निकालोगे तो आपको तीन ही बॉडी मिलेंगी, उससे ज्यादा मिलेंगी नहीं। नो डाउट देयर कैन बी 6, 8, 10 नंबर ऑफ लिंक्स, बट जब आई सेंटर आप ढूंढ रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि यू आर टेकिंग ओनली 3 बॉडीज इनटू कंसिडरेशन फॉर फाइंडिंग आउट द आई सेंटर्स, और उसमें भी एक फिक्स हो रहा है। Yes, sir. Got it, sir. Got my point? Yes, sir. So if three bodies, मोटी तौर पे, if three bodies have a relative motion among themselves, there will be 3 eye centers, and it's a foundation that all the 3 eye centers should fall on a straight line. And this theorem is given by Kennedy's, therefore it's known as Kennedy's theorem. Clear? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. अब how to locate the eye centers? The next topic is how to locate the eye centers. अब आप देखो, this is a 4, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है।
आपके पास 4 बार चेन दिया हुआ है, ये 4 बार चेन मैकेनिज्म है, अब ये चेन नहीं रह गया, मैकेनिज्म हो गया, क्योंकि एक लिंक आपने फिक्स कर दिया 1 2 3 and 4. देयर आर 4 बॉडीज, तो 4 into 3/2 कितने आई सेंटर्स होने चाहिए? 6. यस सर। Yes, तो sir. आप बेसिकली क्या करोगे, यू विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, यू विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ, थोड़ा बड़ा बना लूं, कंजूसी क्यों कर रहा हूं मैं, you will draw a circle of any radius. ठीक है, कितने लिंक्स हैं इसमें? 4 हैं। सिक्स You will, सर। 4 लिंक्स हैं बेटा, 1 2 3 4। यस सर। तो आप 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. लेट दिस बी पॉइंट नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ओके, क्लियर? यस सर। Yes, Now Yes, sir. out of 6 eye centers, or out of any number of eye centers, there are few eye centers which can be always located through visual inspection. इसमें 6 हैं, कईयों में अगर 6 लिंक हो जाते तो 15 सेंटर हो जाता, आई सेंटर्स हो जाते. सो वेदर इट्स 6 और 15, कितने भी हों, out of 6, for the present case, out of 6 eye centers, there are few eye centers which can be simply located through visual inspection. Means आप आंखों से देख करके बता सकते हो. और उसमें क्या है, all turning pairs are an eye center in themselves. All turning pairs are an eye center in themselves. Link number 1 is connected to the link number 2 through a turning pair. तभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था ना, सर्कल क्यों बना रखा है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो आपने सही जवाब दिया था. 1 is connected to 2 with the help of a turning pair. 2 is connected to the link number 3 with the help of the turning pair. 3 is connected to 4 with the help of a turning pair, and 1 is also connected to the 4 with the help of a turning pair. Since it's between this eye center, therefore it can be treated as it is an eye center. Since it is between link number 1 and 2, therefore this is I12. This is formed between 2 and 3. I will say it is I23. This is between 3 and 4. It is I34, and this is between 1 and 4. Though you can write it as 41, but the custom is write it as I14. Okay. ओके सर. इसमें स्लाइडिंग नहीं आया, नहीं तो स्लाइडिंग पेयर भी विजुअल, स्लाइडिंग के लिए भी आई सेंटर भी विजुअल इंस्पेक्शन से मिल जाता है आपको. वो जब आएगा तब की बात तब करेंगे. ओके, सो कनेक्ट 1 to 2, connect 1 to 2. This is representing I12 with form line 2 to 3, I23, 3 to 4. This is I34, and 1 to 4. This is I14. फॉर्म लाइन से उसी को कनेक्ट करोगे, उन्हीं आई सेंटर्स को कनेक्ट करोगे जो विजुअल इंस्पेक्शन में लोकेट हो चुके हैं. ओके, क्लियर यहां तक? नाउ सर्कल के बारे में भूल जाओ. सर्कल सिर्फ मेरे को ये था कि नंबर ऑफ लिंक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए था. नाउ you are having a rectangle or a square, जो कुछ भी आप कह लो, in the form of 1 2 3 and 4. Now what I have to do, I have to connect two vertices in such a manner that the original figure 1 2 3 4 is splitted in 2 triangles, and the side forming the split of this figure is a common side for both the triangles. It means simply, if जो मैंने इतना प्रवचन दिया है, इसका मतलब क्या है, just connect 1 to 3. Okay, and this will represent the eye center I13. The moment I join, अब देखो ये मैं विजुअल इंस्पेक्शन से नहीं किया, मैं इसे लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. I am already I'm having a rectangle in the form of 1 2 3 and 4. I'm using the concept that I'm joining the vertices in such a manner that the line joining the vertices splits the original figure 1 2 3 4 into 2 triangles. सिर्फ ट्राइंगल्स कह रहा हूँ, सिमिलर आइसोसिस और कोई ट्राइंगल की कैटेगरी नहीं बता रहा हूँ. इट स्प्लिट्स द ओरिजिनल फिगर इनटू 2 triangles, and this side is a common side for both the triangles. Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now you are getting 2 triangles, 1 2 3 and
1, 3, 4, with 1, 3 being the common side. Okay. Now I'll take the first triangle 1, 2, 3. The I-centers are 1, 2, 2, 3, and 1, 3. Where is 1, 2? This is 1, 2. Where is 2, 3? This is 2, 3. So if there is a third I-center, I1, 3, it should be on the straight line joining these two centers. वो straight line यहाँ तक चली गई. आप नीचे की डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो. Okay, when you are not aware. दूसरा ट्रायंगल क्या है? The second triangle is 1, 4, 3. 1, 4, 3. One side is 1, 4. The another side is 3, 4. So if there is a third I center, I2, 3, sorry, 1, 3, ये 1, 3 था ना? हाँ. So if there is a third I center, it should be on the straight line joining these two I centers. और ये आपने इस सेंटर को लोकेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और देखिए जहां पे इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी दी आई सेंटर I1, 3. क्लियर? यस सर. सो आउट ऑफ 6 आपने 5 लोकेट कर लिया. आउट ऑफ 6 आपने 5 लोकेट कर लिया. अब छठा लोकेट करना है. सो इफ आई जॉइन द वर्टिसेस 2 विथ 4, मेरे पास क्या आ जाएगा? Triangle 1, 2, 4 and 2, 3, 4. Now I'll talk about the triangle 1, 2, 4. The sides are 1, 2, 2, 4. Where is 1, 2? This is 1, 2. This is 1, 2 and this is 1, 4. So if there is a third I center known as I 2 से 4 connect हो रहा है, I2, 4, it should be on the straight line. इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर दिया. दूसरा फिगर कौन सा बना था आपका? ये वाला 2, 3, 2. 2 कौन सा बना था बेटा? 3, 4. 2, 3, 4. हाँ ये वाला था 2, 3, 4. तो एक है 2, 3, एक है 3, 4. 2, 3 कहाँ पे है आपका? 2, 3 ये है, 3, 4 ये है. So if there is a third I center 2, 4, it should be on the straight line joining these two I centers. दोनों को आपने एक्सटेंड किया. ये जहां पे कट किया, this is the sixth I center I2, 4. 6 के 6 I centers आपके लोकेट हो गए. अब अगर मेरे से पूछा जाता व्हाट इज द वेलोसिटी, इसका आरपीएम आपको हमेशा दिया होगा, से 10 रेडियंस पर सेकंड क्लॉकवाइज घूम रहा है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट सी. नाउ एट दिस इंस्टेंट व्हाट यू फाइंड दैट द आई center 1, 3 is covering the extreme ends of the link BC. It means the complete link BC at this instant is rotating with respect to the center I1, 3. Yes or no? So can you repeat this line? How sir, how it's rotating with same speed? तो I center किस बात का हुआ? हाँ ठीक है I center same, ठीक है, okay sir, with same speed. That's important. ठीक है. Now when you look at the I center I1, 3, it is covering the extreme ends of the link BC. B से भी पास हो रहा है, C से भी पास हो रहा है. It means the complete link BC with the extreme points B and C at this instant, both the points are rotating with respect to I center I1, 3. It means the complete ring is rotating with respect to I1, 3 at this instant. Yes, sir. Point B मालूम है, velocity of point B तो मेरे को पता ही था. Velocity of point B क्या है? With respect to A, it is omega AB into AB. Omega AB दे रखा है, AB लेंथ दे रखा है. You know the velocity of point B with respect to A. Okay? अब क्या करना है मुझे? कॉन्सेप्ट यूज करो, V is equivalent to R omega. Velocity of point B आपको पता है. What is R? R is the distance from the center of rotation. I1, 3 B. ये डिस्टेंस हो गया इंटू ओमेगा. यार ये पॉइंट चाहे इसके रेस्पेक्ट में रोटेट करे या इसके रेस्पेक्ट में रोटेट करे, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इट विल हैव ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है.
तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी तो आपको पता ही है, I13b इज द डिस्टेंस, आपने स्केल से बनाया, यू कैन मेजर इट। यस सर। तो इससे इस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी कि नहीं? यस सर। यस ये सर। आपको देगा ओमेगा बी सी। अब मैंने पूछा सी से है, तो फिर आप क्या कहोगे? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू I13c into omega bc. I13c can be measured. Omega bc आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, therefore you will get the velocity of the point C. यस सर। ठीक है, सो यस सर। यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं, थोड़ा सा पढ़ना, उसके बाद इस पे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे कल। ओके, जस्ट बी देयर फॉर द अटेंडेंस पार्ट।